चितवों अंदिन नीत खोल कपट गुर में लिया। नानक हर संग मीत राग सोही छंत महला पंजवा। कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गोबिंद गुण गावन लागे हर रंग अंदिन जागे। गोबिंद गुण गावन लागे हर रंग अंदिन जागे। हर रंग जागे पाप पागे मिले संत प्यारिया। गुरु चरण लागे परम पागे काज सगल सवारिया। सुन श्रवण बाणी सहज जानी हर नाम जप वड भागा। बिनवंत नानक शरण स्वामी जियो पिंड प्रभ आगा। सुन श्रवण बाणी सहज जानी हर नाम जप वड भागा। बिनवंत नानक शरण स्वामी जियो पिंड प्रभ आगा। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਟੁਡੇਜ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗ ਫਰੋਮ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। We'll cover the translation, the explanation of the Hukamnama in Punjabi to start with for first 10 minutes, followed by translation in English. Stay tuned and have a great time. So ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਹਰ ਰੰਗ ਅੰਦਿਨ ਜਾਗੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਦੋਂ ਹੈ?
हर रंग अनदिन जागे, दिन ते रात उस परमात्मा प्रति प्यार पैदा हो जाता। किदां दा प्यार? एक घड़ी ना मिलते तां कल जुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। मोहे रैन ना व्यावै नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। मेरे परमात्मा, तेरे दर्शनां तो बगैर एक घड़ी मैं रह नहीं सकता। एक घड़ी ऐदां प्रतीत होंदा भी जिद्दां कलयुग है। जिंदगी दी रात चंगी नहीं लगती तेरे दर्शनों तो बिना। मैनू नींद नहीं आती, भाव मेरा मन बेचैन है तुहाडे दर्शनों तो बिना। इनू कहंदे साध संगत जी प्यार। सिमरन ते भगती बाबा प्रिथी चंद उन्होंने भी की सी, पर उन्होंने प्यार पैदा नहीं होया वाहिगुरू का। वाहिगुरू की बख्शिश नहीं हुई। वो गुरु अर्जन देव महाराज के हिस्से आया। बाबा लक्ष्मीदास, बाबा श्री चंद, बाबा बुढ़ा जी, होर कई गुरसिख, उन्होंने गुरु नानक देव महाराज की संगत की है, सिमरन किया, सेवा की। पर साध संगत जी जो भाई लहना नूं दात बख्शिश हुई है, जो सफलता उन्होंने प्राप्त हुई है सेवा ते सिमरन की, वो किसी को नहीं हुई। गुरु नानक देव महाराज के अपने साहिबजादियां नूं वो बख्शिश नहीं हुई। गुरु नानक देव महाराज की सेवा करते सन, पर रंग नाल नहीं, प्यार नाल नहीं, सिर्फ एक खाना पूर्ति करने वास्ते। सो गुरु महाराज फरमाते ने उन्होंने गुण गाने सफल ने जिन्होंने परमात्मा के नाल प्यार पै जाए। केरी घड़ी महाराज फरमाते ने हर रंग अन दिन जागा। ऐसा परमात्मा नाल प्यार पे दिन ते रात मन बिल्कुल जागदा रहे, भाव परमात्मा सुरत दे विच होए। हर रंग जागे पाप भागे मिले संत प्यारिया। जदों उस परमात्मा नाल प्यार पैंदा ते साध संगत जी जिहड़े पाप ने तां धुपदे ने। कई बारी सवाल हुंदा ना भी मैं बाणी बहुत पढ़ी आ, बहुत पाठ कीते ने, बहुत सिमरन किया, पर दुख हाले भी बनया होया। पर प्यारिया तू नाम सिमरन करदा पापां नूं गवाउण वास्ते, तेरे पाप ऐदां लथने नहीं। जब तक तू सिमरन नहीं करदा ते तेरा वाहिगुरू नाल प्यार है। गल समझने की कोशिश करो। सिमरन तां करना भी वाहिगुरू नाल प्यार पा जाए, तो जे वाहिगुरू नाल प्यार पै गया तो पाप अपने आप कट्टे जाणगे। जे सिमरन करना प्यारिया तू पापां नूं कट्टण वास्ते, तेरे पाप नहीं कट्टे जाने। बड़ियां डूंघियां गल्लां साध संगत जी जो गुरु अर्जन देव महाराज ने अज सानू समझाइयां। मिले संत प्यारिया, वाहिगुरू की बख्शिश होई, तेरा आला दुआला वो साफ हो गया। तेरी हुण संगत संतां नाल बन गई, भले पुरुषां नाल बन गई जिन्होंने रब नाल प्यार है। गुर चरण लागे भरम भागे काज सगल सवारिया। सब तो वड्डा संत साध संगत जी परमात्मा आप है। परमात्मा दा
सूक्ष्म स्वरूप शब्द है। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। जो निर्गुण स्वरूप है परमात्मा का वह है शब्द, तो सरगुण स्वरूप जो वाहिगुरु का है वह है गुरु। पर परमात्मा की जोत हर एक जी दे विच, हर एक कण कण दे विच वसती है, वो है निर्गुण स्वरूप। जो सरगुण स्वरूप ਜਿਹੜੇ परमात्मा नाल एक हो गए वो परमात्मा का सरगुण स्वरूप है, जिन्हों असी देख सकते हैं, जिन्हों असी महसूस कर सकते हैं। सो गुरु के चरणों के नाल जदों मेरी सुरत जुड़ी, भाव शब्द के नाल, गुरु चरण लागे भरम भागे। जिन्ने मन दे विच भरम सी भी परमात्मा कित्थे वसदा, परमात्मा किदां दा लगदा, वो सारे भरम मुक गए। काज सगल सवारिया, सारे कारज पूरे हो गए। सब तो वड्डा कारज साध संगत जी है जिंदगी दे विच परमात्मा नूं मिलना। जे वो कारज पूरा नहीं होया, बाकी भावें दुनिया के सारे कारज पूरे हो जान, कोई मायना नहीं रखते साध संगत जी। हुण महाराज फरमाते ने कि किस तरह परमात्मा के दर्शन होण, किहड़े रूप दे विच। जिस तरह असीं वाहिगुरू दे गुण गाउने आ ते साडे हिरदे विच प्यार उपजदा, फिर सानू अंदरों अनहत बाणी सुनदी आ, अनहत नाद सुनदा। सुन श्रवण बाणी सहज जानी। कन्ना नाल वाहिगुरू दे गुण सुन के, उस्तत सुन के, जिहड़ी अंदर सहज दी बाणी आ, ओंकार दी धुन है, वो सुनन लग पई। ओंकार एक धुन, एक है राग अलापे। जिन्हां दी सुरत धुन नाल जुड़ गई, महाराज फरमांदे ने धुन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानिया गुरमुख अकथ कहानी। हुण सहज बाणी, अनहत बाणी, अनहत शब्द दे नाल जदों सुरत जुड़ी आ, महाराज फरमांदे ने हर नाम जप वड भागा। वड्डे भागां दे नाल इस तरह की अवस्था प्राप्त होंदी है जदों अनहद नाद भाव सहज की बाणी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, पर जिन्हां ते किरपा हुंदी है उन्हां नूं फिर अनहत नाद, वाहिगुरू दा नाम, अनहत बाणी, एक शब्द उहदी प्राप्ति हो जाती है। वो बड़े वड्डे भागां वाले ने। बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगै। बिनवंत दा भाव अरदास, नानक अरदास करदा, मेरे मालका मैं तुहाडी शरण च आया, जियो ते पिंड, मेरा शरीर ते मेरा मन तुहाडे अगे मैं धर दिता। अनहत शब्द सुहावा, सच मंगल हर जस गावा। जिहड़ा हुण अनहत शब्द मैं अनुभव कर लिया अपने शरीर दे विच, वो मालका तुहाडा दर्शन सुहावा, मैंने बहुत ही सोहना, इहो जिहा मैं कभी भी जिंदगी च महसूस नहीं किया। इन्नी कभी भी जिंदगी दे विच खुशी नहीं आई, इन्ना आनंद नहीं बनया जिहड़ा हुण बनया अनहद शब्द दे नाल सुरत जोड़ के। अनहत शब्द सुहावा, सच मंगल हर जस गावा। हुण मैं सच्चे मंगल भाव
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਗਾਉਣਾ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਰ ਹਰ ਦੁਖ ਨਾਸੇ ਰਹਿਸ ਉਪਜੈ ਮਨ ਘਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਚਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਿਸ ਉਪਜੈ ਮਨ ਘਣਾ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਪਿਕਚਰ, ਮੂਰਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ। ਬੜੀ ਆਸ਼ਚਰਜ ਰੂਪ ਪਿਕਚਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਹਿਸ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਉੱਠਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਸ਼ਚਰਜ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। Today's ਹੁਕਮਨਾਮਾ is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj in Rag Suhi. Rag Suhi creates the devotional mood. Today's hukamnama is from Ang 778. So Guru Maharaj, Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals in today's hukamnama how we can meet God. Number one, God is formless. How it is like to meet God? Because a lot of people ask this question. In Gurbani, the message of union with God or attaining merger with God is repeated many times. But what it is like to meet God? In what form we meet God? So in the first line, Guru Maharaj describes the process step by step. It's like trying to educate a little child. We are all children who are ignorant. Ignorant in the terms of spirituality. How do we meet God? Who has made this creation? How this creation is being sustained? We are all ignorant. Maybe someone is very, very intelligent, very clever doctor, very clever scientist, but at spiritual level, not many people are blessed to have that knowledge, the Brahm Gyan. So Guru Maharaj begins the process, the first step. Those who want to meet God start pondering over or chanting God's praises. Gobind Guna Gavan Lage. Gobind means Almighty God who knows everyone's feelings and everyone's emotions. There is nothing hidden from God. So you have to assume first that God exists. You have to acknowledge that fact and start singing the virtues of God. Gun gao de. Sadho Gobind ke gun gao. Gun Gobind gayo nahi, janam akarth keen. There are a lot of people who praise God, but not necessarily they are blessed with the experience of God. Reason, Guru Maharaj describes in the second line. To be able to merge with God, you need to develop love for God. Har rang andin jage,
Rang means color. That's the literal meaning. It implies love. An din means day, an means night. Jage means to remain awake. The benefit of praising God, or the fruit of praising God, is that you will be immersed in God's love day and night, and you will be awake. Means in your conscience, in your surth, there will be only one Lord, no one else. Once you develop that passion or love for God, all your sins will be eradicated. Your mind will be washed off all the sins you have accumulated over many, many lives. Har rang jage, paap bhage. Now, paap means sins, bhage means run away. The sins will run away from you. You will become immaculate like God. Mile Sant Pyarya. You will meet the true saints of Lord who are loving. Last night I was watching a program on the television. What do you need in your life? Now this person is talking about life after retirement. What do you need in your life? You need good bunch of people around you who are loving and caring, who are absolutely dedicated to Almighty God. So people with positive thinking, people who are cheerful, they will change your life for good. And these people who serve God, who love God, and they love everyone, they are humble, they are called true saints of God. So benefit of praising God is that all your sins will be washed away, provided you have love to meet God. And you will have the company of the saints, people who are dedicated to God, who have love, who have sweetness in their life. Sat Sangat is a blessing. Company of the holy is a blessing. If you don't have good company, your soul will rot, your mind will rot, and your body will rot. If you are living with the people who are arrogant, who are short-tempered, angry, always talking negative, slandering others, you are destined for ruin. You will be destroyed. So how many benefits there are in praising God? I think this is a real blessing today. Guru Maharaj is opening our eyes. Guru Charan lage param bhage, kaj sagal swarya. When one attaches himself to Guru's feet, all the doubts are taken away. There is no question in your mind. When you talk to people, people have so many questions about spirituality in general, about the life. But once you meet God and all your sins are eradicated, you are clean and immaculate, you have no questions left. Guru Charan lage param bhage. Our Guru, Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, answers every question on the earth. Any question any human being may have. So all the doubts are removed by contemplating and studying Guru Granth Sahib's Bani. Kaj sagal swarya.
All the kaj, all the deeds and affairs are accomplished. All the objectives met. There is one main objective of this life, that is to meet God, become one with God, experience God in this life, who is our Creator. Once that karaj, that deed is accomplished, that mission is complete, all other deeds, all other wishes are granted. Sabbe ichha puriyan jan paya agam apara. Now question is, which form God exists in? So Guru Maharaj makes it clear. Sun Shravan Bani Sahaj Jani Har Naam Jap Vad Bhaga. Carry on listening to the songs of praises of Almighty God with your ears. So Shravan means to listen. Bani means song of praise. By continuing doing this, once you have love for God, you will realize the Sahaj Bani within yourself. Now Sahaj Bani has different names to it. Anhat Bani, that divine melody that continuously plays throughout the universe. Sahaj Bani is also called Anhat Bani. Anhat Bani gur shabad jani har naam har ras pogo. Kahe Nanak Prabh aap milya kan kan jogo. Anhat Bani is also called Vaheguru's name, God's name. Also known as Anhat Shabad. Also known as one Shabad. One divine word. So Guru Maharaj reveals, with Vaheguru's blessing, when you have craving to meet God, that love is so rewarding that God will help you to experience the Sahaj Bani, and that is experience of God. So which form we experience God in, that is form of a melody. Anhat Naad, Anhat Shabad, Naam. Once you have experienced that, Guru Maharaj reveals you are so fortunate. Har Naam Jap Vad Bhage. I'm going to repeat this line. Sun Shravan Bani Sahaj Jani Har Naam Jap Vad Bhaga. Binwant Nanak Sharan Swami Jio Pind Prabh Aga. Binwant means to pray. Nanak prays to you, Almighty God. I have come to your Sharan, your sanctuary. And I offer this body and soul back to you because this is all yours. Nothing belongs to me. All my life, I own my body and soul, thinking this is mine. It's not mine. This is all yours. So this is a total surrender which you need to be able to merge with God. In the second part of the Hukamnama, Guru Maharaj reveals Anhat Shabad Suhava. Now, Shravan Bani and Anhat Shabad is the same thing. The Shravan Bani, the Anhat Bani and the Anhat Naad, the Anhat Shabad is so Suhava, means it gives me so much peace and comfort. It gives me so much bliss. I can't describe it. Such Mangal Harjas Kama, because it is so soothing. There's so much bliss in this. I want to carry on experiencing this Anhat Naad. So I praise you, Almighty God, all the time now. I sing your Mangal. Mangal means song of praise. Har jas gawa, I sing your glory. Gun gaye har har dukh nase. Rahas upje man kana. Very important. You know, when you read a novel,
or you watch a movie, or you watch something beautiful, you are filled with the feeling of amazement that is called rahas. So you might be reading scriptures, you might be worshipping God, but you must reach that state of mind where you are fascinated by Almighty God's creation and His presence. That's called rahas. And that is so important to actually have the feeling of meeting Vaheguru, because you now want to meet the Supreme Lord. And that desire to meet God helps you to merge with God. जिनको लगी प्यास अमृत से खाएं, कल मैं एहो पुन गुन गोविंद गाएं. I'm going to just give you an example in the end. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, he had two sons, Baba Lakshmi Das, Baba Shri Chand. And he had lot of Gursikhs, lot of followers, whom Guru Nanak Dev Ji enlightened and encouraged and inspired to serve one God. When Guru Nanak Dev Ji Maharaj tested them, none of them was successful. All of them, they served Guru Nanak Dev Ji. They followed Guru Nanak Dev Ji because they had nowhere else to go. But Bhai Lehna, only one person who served Guru Nanak Dev Ji because he loved Guru Nanak Dev Ji. Now there is a difference. You can meditate so that you can be happy in your life. Or you can meditate because you love God. There is a difference. The meditation which is done because you love God, that is fruitful. That will remove all your sufferings. It's a very great lesson today. Meditate because you love God. Don't meditate because you want to get a good job, because you want to marry someone who is right for you. Because that is not going to bring fruit. What is going to bring fruit in your life is when you meditate because you adore God, because you love God. May Satguru bless you all. Have a great day. Share the Fateh. Vaheguru Ji ka Khalsa. Vaheguru Ji ki Fateh.